Hey guys, welcome back to my channel CMA Future. This is my new video of financial accounting series number 5, in which we are going to study about capital receipt and revenue receipt. In the last video we had covered capital expenditure, revenue expenditures. So today we are going to start with capital receipt and revenue receipt. Okay. Capital receipt मतलब क्या होता है? Which all receipts incurred in capital nature, whose benefit is next year also, not only this year, for next year also we are going to get the benefit on that. What all receipts we have received which are in capital nature, those are capital receipts. Capital receipt is when proprietor contributes towards business or any contribution made capital outside the business. It does not affect the profit earned or loss incurred during the course of year. मतलब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अफेक्ट नहीं होता, नॉट अफेक्ट, ओके, बट वी गेट कैपिटल, न्यू कैपिटल वी गेट, और एनी कॉन्ट्रीब्यूशन इज मेड. जो आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉसेस कितना हुआ है, उसके ऊपर कैपिटल रिसीट नहीं होता. ओके, सो वी आर गोइंग टू गेट affected on profit and loss account. Course of business, it is not for the course of business, it is for the next year benefit. next year उसका next year उसके लिए benefit है. that is all capital receipt. revenue receipt मतलब क्या? when it will be said, when goods or services we supply or whatever we receive money. okay, revenue ही मतलब receive money. okay, money. So it is called revenue receipt. It is an ordinary course of business. मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस चल रहा है, जो अकाउंटिंग ईयर चल रहा है, उसके लिए रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं. जो करंट पीरियड में एक्टिविटीज हो रहे, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट. ओके, विल सी द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट. इट हैज़ शॉर्ट टर्म इफेक्ट. द बेनिफिट इज एंजॉयड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड. मतलब करंट ईयर के करंट पीरियड एक्टिविटीज़ जो चल रहे हैं उसके लिए रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं. इट इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट. द बेनिफिट्स आर एंजॉयड फॉर मैनी ईयर्स इन फ्यूचर. जो रिपीटेडली ऑकर होता है रेगुलर बेसिस पर, दैट इज़ रेवेन्यू रिसीट. एंड जो अगेन एंड अगेन इरेगुलर रिपीट होता है, इट इज़ कॉल्ड कैपिटल रिसीट्स. दिस इज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट credit side, and this is in balance sheet liability side. It does not produce capital receipt. Capital receipt when invested produces revenue receipt. मतलब revenue receipts cannot be capital receipts, but when capital receipts invest करते हैं उसके ऊपर revenue expenses होते हैं जो regularly incur होते हैं, so that will produce revenue receipt. Okay. Next is this does not increase or decrease the value of asset. मतलब रेवेन्यू रिसीट क्या करता है? एसेट को अफेक्ट नहीं करता. बट कैपिटल रिसीट व्हाट इट विल बी, it will decrease the value of the asset and increase the value of the liability. Sometimes expenses of the capital nature are to be incurred for revenue expenditure. जो भी कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं वो रेवेन्यू रिसीट के लिए होते हैं, कि इनकर होते हैं. बट समटाइम्स एक्सपेंसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर के जो एक्सपेंसेस रहते हैं वो इनकर होते हैं फॉर कैपिटल रिसीट्स के लिए. वहीं पर
एक्सपेंसेस ऑफ कैपिटल नेचर के लिए इनका जो होते हैं वो रेवेन्यू रिसिट्स के लिए रहते हैं. तो मेरे पास सम्स है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिफरेंशिएट करते हैं. So I have some sums, student. So let's take one by one. Carriage of rupees 7,500 spent on machinery purchased and installed. So it is a machinery purchases. It is capital expenditure. Okay. Advertising expenses for launching a new product of a company of rupees 20,000. So advertisement क्या आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है. सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. पेड फॉर सर्विसिंग द कंपनी व्हीकल इंक्लूडिंग 50 रुपीज़ पेड फॉर चेंजिंग द ऑयल. सो दिस इज ऑल्सो रेवेन्यू. सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, व्हीकल का ही है, एसेट का ही है, पर इट इज़ फॉर सर्विसिंग, दैट इज रेवेन्यू. कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसमेंट costing 1,95,000 at the factory premises. So construction of basement, it is one time expenditure, capital expenditure. Paid a bill of 10,000 of Mr. Kumar, who was engaged as a irrigation engineer to set up a new automatic machine costing 20,000 at the new factory site. So bill पे किया है मिस्टर कुमार को, that is the entry. But for what reason? It was for setup of new automatic machinery. So it is a capital expenditure. A revenue of incurred 26,000 एक्सपेंडिचर ऑन वेरिड एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स. मतलब रेगुलर बेसिस पे ये होता है ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन. पीक फेस्टिवल सीजन पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इन अकॉर्डेंस विद द लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ प्रोवाइडिंग अ वेल एक्यूपाइड लेबर वेलफेयर सेंटर स्पेंड 90,000 being the budget allocation for the year. मतलब एकदम से प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म प्लान, मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए वी आर डूइंग इट, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. एंड एक्सटेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक्स इन द फैक्ट्री एरिया, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड का बेनिफिट होता है इसीलिए. वेजेस पेड टू मशीन ऑपरेटर्स. So wages paid, wages is revenue expenditure. It will be incurring. Installation cost of new production machine. Production machine के लिए installation cost है capital expenditure. Materials for extension to foreman's offices in the factory. Extension हुआ है materials के लिए जो future benefit होता है, that is capital expenditure. Next comes rent paid for the factory. Rent paid is revenue expenditure. Payment for computer time to operate a new stores control system, revenue. Payment किया है to मतलब इस ईयर के लिए हुआ है वो expenditure. It is not benefit for the further. Wages paid हुआ है for to own employees for building the foremen. बिल्डिंग करने के लिए वेजेस पे किया है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. पेमेंट ऑफ वेजेस टू one's own employees for building a new office extension. कैपिटल ये हो रहा है, कैपिटल फॉर बेनिफिट ऑफ मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर के लिए है. सो इट इज़ ऑफिस कैपिटल एक्सपेंडिचर. कंप्यूटर हायर चार्जेस शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. हायर चार्जेस है. नेक्स्ट वन इज परचेज ऑफ अ न्यू कंप्यूटर फॉर यूज इन अ बिजनेस. कंप्यूटर परचेज हुआ है, एसेट परचेज हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर.
यूज़ ऑफ मोटरसाइकिल हायर फॉर 5 years बट नॉट पेड बट पेड एट एवरी 6 months, मतलब पेमेंट हुआ है, हायर हुआ है, पेमेंट्स हो रहे, मोटरसाइकिल परचेज नहीं हुआ है, सिर्फ यूज़ के लिए हुआ है, तो रेवेन्यू एवरी 6 months के लिए एक्सपेंडिचर आएगा, सो रेवेन्यू. नेक्स्ट इज फ्रेट कैरिड ऑन द न्यू मशीन. न्यू मशीन के लिए फ्रेट कैरेट एक्सक्रीशन चार्जेस हुआ है. सो ऑल दिस टुगेदर क्या करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में डालते हैं कि न्यू मशीनरी है, इंस्टॉलेशन में सब चार्जेस आते हैं. फिक्चर्स ऑफ द बुक वैल्यू इज 2500, सोल्ड एट 1600. न्यू फिक्चर्स ऑफ द वैल्यू 4000 वेयर एक्वायर्ड. कार्टेज ऑन द परचेज वॉज 100 रुपीज़. सो बुक वैल्यू कितना है, 2500 है. सेल वैल्यू कितना हुआ है, 1600. 900 क्या हुआ है, लॉस हुआ है, कैपिटल लॉस होता है. न्यू फिक्सचर्स क्या करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं बिकॉज न्यू असेट्स आते हैं. जो असेट्स के लिए कैटरेज वगैरह ये परचेज करते हैं वो उसको लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं. ऐसे ही फिक्चर्स नहीं चालू होता है, सो वी हैव टू परचेज इट एंड देन that is also included in the capital expenditure. Next one, a sum of rupees 400 was spent on painting the factory. वो बार बार आएगा, बार बार पेंटिंग का एक्सपेंसेस आएगा, सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एंड इट इज़ ओनली बेनिफिट फॉर द अकाउंट करंट ईयर. 8200 spent on repairs before using a second hand purchase recently to put it in usable condition. तो एक ये सेकेंड हैंड कार ये किए थे, परचेज किए थे, दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर. उसके लिए रिपेयर्स के लिए टू पुट यूज़ करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने एक्सपेंसेस किया है. 350 was spent on repairing a second hand machinery purchased on 8th May 2013. 200 was paid on carriage and freight in connection with its acquisition. सो दोनों मिलके क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. वी स्टार्टेड, वी हैव जस्ट परचेज इट एंड वी हैव स्पेंट ऑन इट रिपेयर करने के लिए. नेक्स्ट वन इज अ सम ऑफ ₹30,000 was paid as a compensation to 2 employees who were retrenched. ओके, कंपेंसेशन पे किया है एम्प्लॉयज़ को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहता है. नेक्स्ट वन इज 150 was paid in connection with the carriage on goods purchased. goods purchase हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैरेज पेड होता है, ऑन परचेज गोस, सो दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. 20,000 custom duty is paid on import of a machinery for modernization of the factory production. करंट ईयर के लिए है. 6,000 during the current year. 6,000 is paid on imported duty for purchase of raw material. रॉ मटेरियल्स है, इम्पोर्ट ड्यूटी चार्ज हुआ है, दैट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. मशीनरी ये हुआ है, इम्पोर्ट हुआ है, कस्टम ड्यूटी पे किए, कैपिटल एक्सपेंडिचर. मशीनरी इज एन एसेट, परचेज ऑफ रेवेन्यू इज अ रेवेन्यू. Purchase of raw materials is goods. So next one is 18,000 interest had accrued during the year on term loan obtained and utilized for construction of factory building. So factory building construction करने के लिए क्या किए थे, लोन लिए थे. Okay, and of that interest has been accrued. And purchase of machineries. However, the production has not commenced till the last date of the accounting year. So loan लिए थे, capital expenditure, not for one accounting year, it is for more accounting years. 50,000 received from issue of shares including 10,000 by way of premium. 50,000 रिसीव होता है, 10,000 उसमें इंक्लूड रहता है, क्या प्रीमियम रहता है. सो 40,000 क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, 10,000 प्रीमियम आया है,
that is capital profit. Next is purchased agricultural land for the mill of for rupees 60,000 and 500 for land revenue paid. 60,000 क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है. 500 जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. Okay, next one, 5,000 paid as a contribution to PWD for improving roads of sugar production area. शुगर प्रोडक्शन एरिया में रोड्स कंस्ट्रक्शन इम्प्रूव हुआ है, कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अगर कंस्ट्रक्शन हुआ रहता तो दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. 40,000 पेड फॉर एक्सेस ड्यूटी ऑन शुगर मैन्युफैक्चर. सो इट इज एक्सेस ड्यूटी, every year we have to pay, recurring it will be revenue expenditure. 70,000 spent for construction railway sites. so एक बार होता है कंस्ट्रक्शन रेलवे साइट का, कैपिटल एक्सपेंडिचर. एक्सपेंसेस incurred in connection with obtaining a license for starting the factory. फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं. 1,000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू अ न्यू साइट. स्टॉक रिमूव करके दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, उसको जो भी एक्सपेंसेस पे करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है. रिंग्स एंड पिस्टन्स ऑफ एन इंजन वेर चेंज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 5,000 टू गेट फुल एफिशिएंसी. सो इट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं और इंजन के वो चेंज किए. रिंग्स एंड पिस्टन्स. 2,000 spent has lawyers fees to defend a suit claiming that the firm's factory site belonged to the plaintiff. The suit was not successful. तो सक्सेसफुल तो नहीं हुआ है, फिर भी lawyers fees will be revenue expenditure, वो बार बार होगा. 10,000 were spent on advertising the introduction of a new product in the market, the benefit for which it will be effective for 4 years. तो बार बार तो नहीं, बार बार तो होगा पर फॉर लिमिटेड इट इज़, बट स्टिल 4 years तक कंटिन्यूस होगा. सो एडवर्टाइजमेंट, तो दैट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अ फैक्ट्री शेड was constructed at a cost of rupees 1 lakh. A sum of 5,000 has been incurred for the construction of the temporary huts for storing building materials. So temporarily built हुआ है, but for what reason? For the construction of the big this. So that is capital expenditure. Redecoration expenses is been done, that is revenue expenditure. Installation of new coffee machine, that is for whole time of the business office, so it is capital expenditure. Next is building an extension of a club dressing room for rupees 15,000, capital expenditure. Purchase of the snacks and food stuff, that is for revenue expenditure. Okay, true or false, we'll see. Overhaul expenses of second-hand machinery purchased is revenue expenditure, that is false, it is a capital expenditure. Money spent to reduce working expenses, it is revenue expenditure, true it is. Legal fees to acquire properties, capital expenditure, yes. Amount spent as lawyers fees to defend a suit claiming that the firm's, this is again same, I have written it here, but they had asked the question true or false, so I just written it, so it is true. Amount spent for replacement of worn out part of a machinery, it is capital expenditure. Okay, next one is expenses incurred on the repairs and white washing for the first time on the purchase of the old machine, old building. So old building पे एक बार हो रहा है, so बार बार नहीं हो रहा है, so that is not revenue expenses, it is capital expenditure. Okay, next one is expenses in connection with obtaining a license. License रन के लिए, सिनेमा रन के लिए करने के लिए लाइसेंस ले रहे, so that is capital expenditure, no, it is a revenue expenditure. Amount spent for the construction of temporary huts which were necessary for the cinema house. Okay, so डिमोलिश तो करते हैं वो बाद में,
पर बड़ा करने के लिए छोटा एक्सपेंसेस रहते हैं, उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो दिस वाज capital expenditure, revenue expenditure, capital receipts, revenue receipts. Okay, this concept is clear, I think so, for you all. In the next class we will see types of accounts, double entry system, modern approach, traditional approach. Okay, thank you guys, please subscribe my channel, and if you like the video, for the more videos press the bell icon. Thank you, bye bye.